Hello everyone. Today we are commemorating World COPD Day. Why is it important to celebrate World COPD Day? Because of its increasing prevalence worldwide, even though it being a preventable disease. So what exactly is COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. It means chronic मतलब long standing बहुत टाइम तक रहता है. ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी मीन्स दैट आपका जो सांस का नली है वो नैरो हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है विच कैन लीड टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. Chronic COPD is directly related to the amount of cigarette consumption in people, and hence it includes two types of diseases like chronic bronchitis and emphysema. The widespread of COPD is related to the tobacco consumption. The risk factors of COPD include: first, 95% of the cases are due to tobacco consumption, the amount of tobacco consumption and the duration, आप कितने टाइम से ले रहे हैं. Second is indoor pollutants like biomass fuels and suppose चूल्हा जिसमें आप कोल या एनिमल डंग यूज करते हैं उस वजह से. Third would be outdoor pollution, like in Delhi right now there is parali due to parali burning. Then fourth there would be other causes like genetic factors and infections which can cause it. Clinical features or the symptoms of this would be that the COPD of basically your lungs get a little weak. Hence, even with the exposure of mild irritants like smoke, it can have acute attacks and hence lead to the constriction of your airway, which can lead to breathlessness. So the symptoms of COPD would be लंबे समय तक खांसी रहना with sputum or mucus बलगम के साथ, plus breathlessness means difficulty in breathing, सांस लेने में तकलीफ, especially during physical exercises or exertion, थकावट होना. In advanced cases, there might be swelling, there might be bluish discoloration of lips and nails, there might be chest tightness. Then people with COPD are at a higher risk of developing heart diseases, lung cancer and a lot of other diseases. Basically for its treatment, first and the foremost important thing जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है stop smoking, complete cessation of smoking, धूम्रपान बिल्कुल रोक देना चाहिए. सेकेंड वुड बी कि आप अवॉइड करें किसी भी तरह के पोल्यूशन के एक्सपोजर से, डस्ट एक्सपोजर को भी आप अवॉइड करो. थर्ड वुड बी कि आप घर में चूल्हा की जगह आप नॉर्मल अलग तरीके के फ्यूल्स ला सकते हो. Alternative fuels can be used and alternative stove can be used in case of चूल्हा. Then सबसे और सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है would be breathing exercises, जैसे कि आप योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा. थर्ड थिंग वुड बी विंटर्स के टाइम आपको स्पेशली ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए बिकॉज COPD बढ़ सकता है विंटर्स के टाइम. फोर्थ वुड बी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आप डॉक्टर्स को दिखाएंगे उस हिसाब से आपको वो रेगुलरली फॉलो करना चाहिए.